to our YT series in which we are decoding UPSC Prelims PYQs from 1979 to 2024. Here we are decoding PYQs of 45 plus years, and it is based on theme wise and subject wise. Subject wise is polity, and theme wise you can see that it is about salient features and amendments. Fine. The same question, it will be appearing on your Edukemy website portal, and the notes will be provided for that. Welcome to the part 3 of the video. For further videos, for its earlier videos, you can check on my polity playlist. And similar initiative has been going on for science and technology, environment and geography. And stay tuned for history as well as economy. So let's start with solving questions. Question number 1, which of the following statements regarding the Constituent Assembly are true? Constituent Assembly से related क्या-क्या statements correct है? It was not based on adult franchise. Yes, it was not based on adult franchise, right? It had a very limited franchise. हम Constituent Assembly की बात कर रहे हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 1946, जब ब्रिटिश रूल एग्जिस्ट कर रहा था, इट वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज. तो फर्स्ट इज करेक्ट. It resulted from direct election. No, it also had nominated members. It also had indirect elections. This is not. तो अपने आप अगर मैं हटाऊं तो आई एम लेफ्ट विथ ए और सी. अपने आप आंसर आ गया बिकॉज सेकेंड इज कॉमन इन एवरीवन. ठीक है, तो यूपीएससी भी चाहता है आप इस तरीके से आंसर निकाले. आंसर अपने आप 1 and 4 आ गया, बट हम देख लेते हैं. इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी. नो, इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज. यस, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज. ठीक है, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फीचर दिया है, बोरो दिया है. यू नो फंडामेंटल राइट्स is borrowed from Bill of Rights, which is USA. Parliamentary system of government we had taken from UK. DPSP from Ireland. An emergency, you know, Weimar Constitution और Germany. अब इसको मिलाते हैं. फंडामेंटल राइट्स इज यूएसए, इट इज बी. तो फर्स्ट का बी है, दिस दिस, तो अपने आप डी गॉन, बी गॉन. फाइन. एंड सेकंड क्या है? सेकंड इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज यूके. तो सेकंड इज ए, राइट. तो आंसर इज सेकंड इज ए, आंसर इज सी. गॉट इट? विद दिस we can easily solve this question. Moving to next question. Question number 3. Which one of the following is in the concurrent list? Concurrent list, इनमें से कौन सी चीज है concurrent list में? Now you know public health and sanitation. It is more of a state list. ठीक है. Capitation, taxes, treasure trove. It is much more of a union list, not concurrent list. But when you talk about population control and family planning, ठीक है, तो सेंटर एंड स्टेट बोथ हैज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव रोल. दिस सीम्स मोर लॉजिकल. आंसर इज ए. जनरली यही पॉपुलर ऑप्शन है. बाकी चीज आप सुने भी नहीं होगे, कैपिटेशन, टैक्सेस और ट्रेजर ट्रोव. जनरली गो विद द पॉपुलर ऑप्शन आल्सो. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एज वेल एज अमेरिकन फेडरेशन? दोनों इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन में क्या चीज कॉमन है? सिंगल तो नहीं है, बिकॉज यूएस हैज अ डुअल सिटीजनशिप whereas India has a single citizenship. Three lists of the constitution इंडिया में है because इंडिया में फेडरल सिस्टम कंपैरेटिवली डिफरेंट है यूएस से. डुअल जुडिशरी, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दिस इज कॉमन टू बोथ इंडिया एंड यूएस. इट इज मोर लॉजिकल. इट इज मोर लॉजिकल स्टेटमेंट. इंडिया में भी फेडरल सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है जो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को. यूएस में भी एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को. आंसर इज डी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. इंडियन फेडरेशन का जो मॉडल है, आपको अगर पता होगा, आपको थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत रीड किया होगा या एनसीईआरटी रीड किया होगा, तो वी हैव टेकन फ्रॉम कनाडा बिकॉज इंडियन स्टेट्स वर नॉट एग्रीइंग टू कम अप टुगेदर. So Sardar Patel played a very active role and started integrating states by talking with princes or princely states. So it is based on Canada model, not a US model. Answer is B. Very easy question. Let's move to next question. Which one of the following is not in the state list? State list में कौन कौन सी चीजें नहीं हैं? अब betting and gambling जो है state list में है. ठीक है, state list में है तो not पूछा हुआ है. Fisheries is in state list, agriculture is in state list. Fine. Not in state list, insurance. ठीक है, इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस की बात करो तो यूनियन गवर्नमेंट इज बेटर एबल टू हैंडल द इंश्योरेंस सेक्टर, so it इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट.
Moving to next question, the 42nd amendment to the Indian Constitution is notable because it gives, ठीक है, तो अगर मैं देखूं इन चारों में तो यू हैव टू पिक अप द सिमिलर लैंग्वेजेस, या तो सी और डी में से आंसर होगा या तो ए एंड बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पेशल ट्रीटमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम, दिस इज एब्सर्ड काइंड ऑफ थिंग, अगर आपने थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा है। प्रीमेसी टू फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, और प्रीमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। नाउ जितनी भी लड़ाई चल रही थी उस टाइम, इट वाज ओवर दिस, टू इंप्लीमेंट द land reforms, to implement the property. There were accusations that our right to property, which was a fundamental right, was being violated. So directive principles and fundamental rights के बीच में लड़ाई थी. Answer is this, primacy to directive principles over fundamental rights. Answer is B. Question number 8, the Constitution of India provides for the nomination of 2 members to the Lok Sabha by the president to represent. Now this question is now not applicable because you know that Anglo-Indian community has not been extended the reservation provisions in Lok Sabha as per Article 335, ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर was this question is now not applicable. Okay, Article 333 provides for the nomination of Anglo-Indians to the Legislative Assembly of State by the President if he is of the opinion that community is not well adequately represented. तो Anglo-Indians जब nominate होते थे तो State Legislative Assembly में 1 सीट होती थी एंड लोकसभा में 2, and Article 333 represent that. Lekin now it is not applicable. Let's move to next question, which is question number 9. The original structure of the Indian Constitution cannot be changed. In which of the following cases Supreme Court of India gave this verdict? Now the original structure cannot be changed. It is nothing but it is just talking about basic structure. So basic structure किससे आ रहा है? Very famous case, which is Keshav Nand Bharati case. Answer is C. This is solution part. Keshav Nand Bharati case and others versus State of Kerala. It was a landmark decision of the Supreme Court that outlined the basic structure doctrine of the Indian Constitution. So with this, we conclude our video. And for earlier videos, you can check out my polity playlist. Thank you.